Hello everyone, welcome back to your favorite channel Chem Visual. So student, आज आम नहीं आसीजु फिजिक्स प्रैक्टिकल रो तीनोटी एक्सपेरिमेंट रो भाइबा क्वेश्चन विथ आंसर. आपन को सब टाइप रो क्वेश्चन पचारिबे ताहा आज आम एठी आलोचना करिबा. तो एक्सपेरिमेंट 1 रे आपन कर आछी वेरिफिकेशन ऑफ ohms law and resistance per unit length. ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭାଇବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି state ohms law. It states that current I through a conductor is directly proportional to the potential difference B across it provided temperature remain constant. Temperature ସ୍ଥିର ରହିଲେ conductor ମାଧ୍ୟମରେ current I is directly proportional to potential difference B. B is equal to IR. Number 2 ରେ ହେଉଛି what is meant by resistance. It is the opposition offered by a conductor to the flow of electric current. तार यूनिट होची ohm. Number 3 रे होची defined potential difference. It is the work done to move a unit charge from a one point to another. तार यूनिट होची volt. V ଏକ यूनिट चार्ज को गोटिया पॉइंट टू अन्य स्थान को घुंचाइबा पई करा जायतिबा कार्य को कहा जाय पोटेंशियल डिफरेंस. Number 4 रे आपनकर आछि why is VI graph a straight line? Because voltage is directly proportional to current when resistance is constant. Number 5 रे होछि what does the slope of VI graph represent? It represents resistance of the conductor. Number 6 रे होछि SI unit of resistance होछि ohm. Why should the key be kept open when not taking reading? To prevent heating of the conductor and change in resistance. कंडक्टर गरम को रोकिबा पई एवं रेजिस्टेंस रो परिवर्तन पई. नंबर 8 रे आपण आछि व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस. जत्ते बेले टेम्परेचर बढ़ी थाए सेते बेले रेजिस्टेंस कोन हुए. रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मध्य बढ़ी थाए. Why thick wires have less resistance? काहींकि मोटा तार गुड़िकर रेजिस्टेंस कम थाए. Thick wires have larger cross sectional area, hence lower resistance. मोटा तार गुड़िकर बहुत cross sectional area अच्छी तेणु तार रेजिस्टेंस कम. Define resistivity. It is the resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area. एवं तार यूनिट होची ओम मीटर. रेजिस्टिविटी होची यूनिट लेंथ एवं यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया रो कंडक्टर रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहा जाए. एक्सपेरिमेंट 2 रे आपन आछि मीटर ब्रिज कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस. सेइथरे आपनकर भाइबा क्वेश्चन आछि फर्स्ट होची व्हाट इज ए मीटर ब्रिज. इट इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन वेस्टर्न ब्रिज यूज्ड टू कंपेयर टू रेजिस्टेंसेस. दुईटी रेजिस्टेंस को तुलना करने पर व्यवहृत वेस्टर्न ब्रिज उपर आधारित एक डिवाइस को मीटर ब्रिज कहा जाए. नंबर 2 रे होची ऑन व्हिच प्रिंसिपल डज मीटर ब्रिज वर्क. इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न ब्रिज एंड नॉल डिफ्लेक्शन. को प्रिंसिपल द्वारा मीटर ब्रिज काम करे. यह वेस्टर्न ब्रिज एवं नॉल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल रे काम करे. फिर आपन को पचारछि व्हाई इज द ब्रिज कॉल्ड वेस्टर्न ब्रिज. ब्रिज को कहीं वेस्टर्न ब्रिज बोली कहा जाए बिकॉज इट यूजेस द वेस्टर्न ब्रिज अरेंजमेंट फॉर कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंसेस. रेजिस्टेंस तुलना पाई अरेंजमेंट फॉर कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ वेस्टर्न ब्रिज यूज्ड इट. व्हाई आर कपर स्ट्रिप थिक. कपर स्ट्रिप मोटा कहीं टू रिड्यूस रेजिस्टेंस एंड मिनिमाइज हीटिंग एंड कंडक्ट रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को रिड्यूस करबा एवं गरम एवं कंटैक्ट रेजिस्टेंस को कम करबा पई कपर स्ट्रिप मोटा होई थाए. व्हाट इज बैलेंसिंग पॉइंट. द पॉइंट ऑन द वायर वेयर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन. पॉइंट जेउठारे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देखाए. नंबर 6 रे होची व्हाई शुड जॉकी नॉट बी प्रेस्ड हार्ड. जॉकी को काहेकि दबाइबा उचित नुहे. प्रेसिंग हार्ड में डैमेज द वायर एंड चेंज इट्स रेजिस्टेंस. से तार को डैमेज करि पारे एवं एहार रेजिस्टेंस को बदलाई देई पारे. नंबर 7 रहउची व्हाट हैपन इफ बैलेंस पॉइंट इज नियर वन एंड. जदि बैलेंस पॉइंट गोटी एंड रे थाए तबे कोन हेबो. एरर ड्यू टू एंड करेक्शन बिकम सिग्निफिकेंट.
एंड करेक्शन हेतु एरर गुड़िक गुरुत्वपूर्ण होता है। नंबर आपंकर आसछि डिफाइन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस अपोजेस्ट करंट फ्लो। रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टेंस करंट को अपोज करे, विरोध करे, एवं रेजिस्टिविटी होची यूनिट लेंथ एवं एरिया रो रेजिस्टेंस होची रेजिस्टिविटी। नंबर 9 रहउची व्हाट इज एंड करेक्शन। एंड करेक्शन कौन? करेक्शन अप्लाइड ड्यू टू एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नियर द एंड ऑफ द वायर। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होची ओम मीटर। एटा मध्ये से क्वेश्चन रिपीट हिची। एक्सपेरिमेंट 3 रे आपनकर आछे डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेतरे आपनकर फर्स्ट भाइबा क्वेश्चन होची व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल। सेल भितर थिबा इलेक्ट्रोलाइट द्वारा प्रदान करा जैथिबा रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाय। व्हाई डज टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज व्हेन करंट फ्लो? ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जोगु। क्वेश्चन अछि ऑन व्हाट फैक्टर डज इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड। इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों कारण ऊपर निर्भर करे? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, यही सब मध्य इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करे। नंबर 4 होची डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ इज वोल्टेज विदाउट करंट, करंट बिना वोल्टेज, एवं टर्मिनल वोल्टेज इज वोल्टेज व्हेन करंट फ्लोज। नंबर 5 रे आपनकर आछि व्हाई इज ए हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर यूज्ड टू ड्रॉ नेग्लिजिबल करंट एंड मेजर एक्यूरेट वोल्टेज। नेग्लिजिबल करंट आंकिबा एवं सटीक वोल्टेज मापिबा पई हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज आमे यूज करू। What is open circuit voltage? Voltage across cell terminal when no current is drawn. SI unit of internal resistance ohm. How can internal resistance be reduced? By increasing electrode area and using good electrolyte. Number 9 आपनकर आछि what is load resistance? External resistance connected to the cell. Number 10 आछि why should reading be taken quickly? To avoid change in temperature and its internal resistance. So आज आम तीनोटी एक्सपेरिमेंट कला। नेक्स्ट वीडियो आउ तीनोटी करवा। आज वीडियो को आम ये शेष करवा। थैंक यू सो मच।